न्याय एक ऐसा शब्द जो विश्वास, सच्चाई और निष्पक्षता की नींव पर टिका होता है। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे बड़ी न्याय प्रणालियों में से एक, हर दिन लाखों लोगों को न्याय देने का काम करती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? वो कौन से चेहरे होते हैं जो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं और अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं, और जो ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में कानून का राज बना रहे। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सुप्रीम कोर्ट में, जहां हाल ही में 4 नए जजों को नियुक्त किया गया है। लेकिन ये नियुक्तियां सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण और न्यायपालिका में एक नए युग की शुरुआत है। भारतीय न्यायपालिका का महत्व। भारत की न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह वह जगह है जहां सत्य और न्याय की रक्षा की जाती है। वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले सुनाए जिन्होंने न केवल भारत की दिशा बदली, बल्कि समाज के हर वर्ग पर गहरा प्रभाव डाला। चाहे वे ऐतिहासिक अनुच्छेद 370 का फैसला हो, अयोध्या विवाद पर निर्णय हो, या फिर महिलाओं के अधिकारों से जुड़ी ऐतिहासिक पहल, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से एक निर्णायक भूमिका निभाता आया है। लेकिन सवाल यह उठता है, आज के समय में न्यायपालिका कितनी मजबूत है? क्या नए जजों की नियुक्ति से यह और प्रभावी होगी? और क्या न्यायपालिका में होने वाले बड़े बदलाव वास्तव में आम आदमी की जिंदगी पर असर डालते हैं? नए जजों की नियुक्ति, बदलाव की शुरुआत। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इन जजों के नाम हैं: नंबर 1 न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, नंबर 2 न्यायमूर्ति आर महादेवन, नंबर 3 न्यायमूर्ति मनमोहन, नंबर 4 न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। ये नाम सिर्फ कुछ व्यक्तियों के नहीं, बल्कि ये उस नए परिवर्तन के प्रतीक हैं जो भारतीय न्यायपालिका में देखने को मिल रहा है। हर नए न्यायाधीश के साथ न्याय व्यवस्था में एक नई सोच, एक नया अनुभव और एक नई ऊर्जा आती है। लेकिन यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या हमारी न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकता है? न्यायपालिका की चुनौतियां और उनके समाधान। भारत की न्यायपालिका का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी इसके सामने खड़ी हैं। नंबर 1 लंबित मामलों का बोझ। आज भारत में लाखों मामले अदालतों में लंबित पड़े हैं। न्याय मिलने में देरी का मतलब है कि कई लोगों की जिंदगी कोर्ट के फैसले के इंतजार में निकल जाती है। नए जजों की नियुक्ति इस समस्या को हल कर सकती है, लेकिन क्या यह काफी है? नंबर 2 डिजिटलाइजेशन की जरूरत। आज भी भारत के कई अदालतों में मामलों की सुनवाई कागजों पर होती है। यदि हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से डिजिटल हो जाए तो फैसले देने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। क्या नए न्यायाधीश इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएंगे? नंबर 3 न्यायपालिका में पारदर्शिता। जनता को अक्सर यह नहीं पता होता कि अदालतों में क्या चल रहा है। न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग यह समझ सकें कि न्याय कैसे दिया जा रहा है। क्या नए जज इस व्यवस्था में कोई सुधार लाएंगे? बार और बेंच, न्याय की खोज में 2 पहलू। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत का कहना है कि न्यायपालिका का पूरा ढांचा 2 चीजों पर टिका होता है: बार यानी कि वकील, और बेंच यानी कि न्यायाधीश। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और इनका एकमात्र लक्ष्य है न्याय की खोज। एक जज अकेले न्याय नहीं कर सकता, उसे निष्पक्ष और सटीक जानकारी देने की जिम्मेदारी वकीलों की होती है। यही कारण है कि हमारी न्यायपालिका में वकीलों और न्यायाधीशों दोनों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या हमारे वकील और जज इस संतुलन को बनाए रख पा रहे हैं? क्या न्याय के इस मिशन में राजनीति या व्यक्तिगत हितों का प्रभाव पड़ता है? न्यायपालिका में आम आदमी की भागीदारी। न्यायपालिका का असली उद्देश्य जनता को न्याय दिलाना है, लेकिन क्या आम आदमी वास्तव में इस व्यवस्था का हिस्सा बन पाता है? क्या उसे सस्ता और जल्दी न्याय मिल पाता है? भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग सालों तक न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। क्या नई नियुक्तियां इस समस्या का समाधान कर पाएंगी? सरकार और न्यायपालिका को मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे ताकि न्याय केवल अमीरों का विशेषाधिकार न बनकर आम आदमी की पहुंच में भी आ जाए। भारतीय न्यायपालिका का भविष्य। भारतीय न्यायपालिका लगातार बदल रही है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति न्याय प्रणाली में नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यायपालिका का असली उद्देश्य न्याय देना है, न कि केवल फैसले सुनाना। हमारी न्यायपालिका दुनिया की सबसे मेहनती न्यायपालिकाओं में से एक है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए पारदर्शिता, डिजिटलाइजेशन और तेज न्याय प्रक्रिया की जरूरत है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारतीय न्यायपालिका आने वाले वर्षों में और अधिक प्रभावी होगी? क्या नए न्यायाधीश देश की न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे? Lord, there is something inherently appealing in the argument of the petitioner. Justice has been done. That's the first, my lord, point
that certainly strikes a judge, that some injustice has been done and we must step in and solve the problem. This is, my lord, the first. There are three limbs to the argument. This is the first, my lord. Prima facie looks very appealing that some injustice is being done to me. Why should not the court after? I will not go to that extent. Let me put it very clearly. Normally, as a court, there are two factors which play with us. One is to do justice, remedy the wrong. That's a factor. That's the instinct, my lord. That should and is No, should be but the instinct. if there is something wrong, let's not fix the remedy problem. wrong. Two is the courts like to normally assume a power because adjudicatory functions should not be curtailed. So, my lord, Not be unnecessarily curtailed until unless the statute specifically, expressly, or by implication takes away that power. So if I can summarize, my lord, the other side, there are three limbs to the argument. One is, if there is some injustice, court's power should not be curtailed. The court ought to, as a matter of justice, step in and fix the problem. This is proposition one, my lord, which itself I will say something on. Proposition two is, if that be the case, then maybe 34 does not have the word vary or modification. However, in order to, my lord, support proposition one, I will persuade the bench to read it in one of three ways. One is adding words, one possible submission. Second is read it in 34(1) as part of setting aside. Second possible interpretation, according to me, my lord, the one which we will have to deal with. And third, forget 34(1), let us read it in 151. So this is point two, my lord. So point one is the court should have the power. Point two is, if the court has the power, these are one of three methods to do it. And three, realizing there's a problem with an untrammeled power, we realize there's a problem that there cannot be untrammeled variation. Guidelines have been suggested by various parties in various different ways. Possibly all of them, my lord, suiting their particular facts of the case. So everybody has their own, my lord, guideline, which perhaps will fit whatever factual background that particular individual has to place or perceived injustice. Lord, we are in a position, my lord, as the learned solicitor, my lord, we are not here on any particular set of facts. There are weighty arguments. You are appearing for whom? My lord, I am appearing for UNCITRAL, UNCCI, my lord. We have intervened as UNCITRAL. There are weighty arguments, my lord, which have been made on the other side, no doubt, my lord. But I will just, my lord, I think we should step back a little, because I think, my lord, we are proceeding on a bit of a misconception, which is this. My lord, we are treating this as an appeal from a judgment. In our mind, my lord, in the court's mind, that the thinking is that this is in some way an appeal from a decision by a inferior court. And, my lord, there are at least, I'll attend them, my lord. My lord, there are at least 3 or 4 aspects which your lordships will consider before coming to the next question is, when can you attack an award? So, my lord, what is critical here is that an award is a baby of a private dispute. It is supposed to be out of the system. It is not supposed to be in the system. It is supposed to be out of the system. There are some implications here. My lord, an award is meant to be final and binding. Very important. It has to be final and binding. It is a consensual process. The moment the arbitrator finishes, his mandate gets over. Consent is over. Subject to, of course, correction and remand. The mandate is over under Article 32. The arbitral tribunal becomes functus officio. So, my lord, there are 2 policy aspects to an award which are not there
in a lower court judgment. One is party autonomy, and I'll explain what is the relevance because I think this is crucial. And secondly, my lord, finality. You go into arbitration, nobody is forcing you, my lord. We have to proceed on the basis that nobody is forcing you to go to arbitration. It is a consensual process. The consequence of this, which has not been, my lord, probably appreciated by the other side, is an arbitrator can be wrong. An arbitrator can be wrong on the merits. He can be wrong on his appreciation of evidence. He can be wrong on the interpretation of law. But the law provides that because I have gone to somebody else other than the courts will never tolerate a wrong order. But I have gone to somebody else, I will take that wrong decision because I want finality. I want a binding award. Therefore, my lord, 34 is restricted that it has to be at the level where there has to be patent illegality. So, my lord, the first point I want to make is, please do not consider this as an simply, my lord, the intention is to keep it out of the courts. So, my lord, however much the instinct is to render justice, that justice has not to be rendered by the court, but that justice has to be rendered by the tribunal. Where your lordships are eager to fix the problem, the first proposition, the law provides and the statute provides that that is a remedy available to the tribunal. And opportunities are given to the tribunal in every stage. A lot award comes if there is clerical, etc., mistake. Then under the old act, section 15, which your lordship was referring to, it went to the court. But that is no longer the case. Section 33 is qua the tribunal. Please keep tribunal on one side, court on one side. 34(4), again an option. Surely the court could have intervened and said, I'm fixing the problem. No, the intention of the law is save the award, go back to the tribunal under 34(4). No, I'm not on the scope of 34(4). Go back to it. No, the third option. Why is setting aside so critical? Not because of essentially, why is modification not provided? Because of the problem of cherry picking. If you actually believe, if you really believe that that tribunal has messed it up, that it has not followed natural justice, or it has gone completely outside the jurisdiction, or it has made such an obvious patent blunder, why should you trust the tribunal's judgment on other points? I give a simple example, and it happens every day. 5 claims are made. 4 are rejected. 4 may be wrongly rejected because it may have been in appeal reversed, but 4 are wrongly rejected. There is no 34. The 5th claim is allowed, but even there the arbitrator commits a mistake, maybe on the overhead or A, B, C, D. If the court tweaks, let us say 5, what is the consequences? You are cherry picking one part of the award. The person who has actually lost, in a sense, because 4 of his 5 have been wrongly disallowed, has no remedy because he accepts the wrong judgment of the arbitrator. So, my lord, when your lordships come to a conclusion of patent, it's a very serious matter to set aside number. When your lordships come to the stage of patent illegality or the stage of setting aside cannot be the norm. Then, because of the seriousness of the matter, the set aside follows because your lordships have lost faith in the tribunal. It is not an appeal where your lordships will modify this, change this. So, this is my first. If he has not challenged the rejection of the 4 claims. My lord, he may have not been able to challenge the rejection of the 4 claims because even though it is wrong. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।